Hi everyone, this is Sarit Kumar. Today I am going to discuss direction, cosines and ratios of a line in space. So before starting the class, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो kindly सब्सक्राइब करें चैनल को and press bell icon to get the new video. So आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्शन, कोसाइंस एंड रेशियोज ऑफ ए लाइन इन स्पेस. So direction, cosine and ratios of a line in space. So consider a line. Direction cosine means suppose एक line है and it is passing through origin. You can see here. Suppose एक line है जो origin से pass कर रहा and this line, suppose this line is L and this line is making an angle of, suppose here this angle with x-axis is alpha, y-axis is beta and with z-axis is gamma. So these angles are known as direction angles. These angles are known as direction angles. Direction angles are those angles when a line is passing through the origin and it is making with x-axis alpha angle, y-axis के साथ beta angle and z-axis के साथ gamma angle. So these angles are known as direction angles. Alpha, beta and gamma. So जब direction angle में आप when you find the direct cosine of this value, cosine जब आप इसका cosine find करते हो, cosine angle, cos alpha, cos beta and cos gamma, these values are known as direction cosines of this line. It is generally denoted by L, cos alpha, cos beta. L, cos beta is denoted by M, and N stands for cos gamma. So L, M and N represents the direction cosines of a line. So if a line is making an angle of alpha and with the positive direction of x-axis, positive direction of y-axis beta angle and positive direction of z-axis gamma angle, then these angles are known as direction angles. और आप जब इसमें cos value find करते हो, cos alpha, cos beta, cos gamma, तो these values are known as direction cosines. So आप जानते हो कि कोई भी लाइन जो है, एक लाइन आप देखो, एक अनदर लाइन है यार. सो इफ दिस इज एंगल अल्फा, सो ये जो एंगल, ये जो लाइन है, इस लाइन के साथ दो एंगल फॉर्म कर सकता है. अगर ये एक्यूट एंगल है देन इट विल बी अप टू एंगल, दैट इट विल बी पाई minus pi, that means 180 degree minus pi. Similarly in this case, for a given line है ना, and it is passing through origin, so there will be two sets of direction cosines. So another जो direction angles हो सकता है, अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हो लाइन का, डायरेक्शन एंगल जो हो सकता है वो क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा. सो दिस कैन बी नॉन एज ना, अगर आप यहाँ कॉस का वैल्यू फाइंड करोगे देन यू विल गेट हियर माइनस ऑफ कॉस अल्फा. सिमिलरली कॉस पाई माइनस बीटा, it will be minus of cos beta, and cos pi minus gamma, it will be minus of cos gamma. So if a line is passing through a origin, so it may makes an angle with positive direction. अगर ये अल्फा, तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ वो हो सकता है कि बीटा एंगल फॉर्म कर रहा हो. नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ वो क्या करेगा, पाई माइनस अल्फा, और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ पाई माइनस बीटा, और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के साथ पाई माइनस गामा. So for a given line when it is passing through the origin, then there will be two sets of direction cosines, L, M, cos alpha, cos beta, cos gamma, or minus cos alpha, minus cos beta, cos gamma. So these are known as direction cosines, direction cosines of a line. So for now we will see second case. If a line is not passing through the origin, suppose a line is not passing through the origin, so we can see here
Suppose a line is not passing through the origin. Suppose a line is not passing through the origin. So you can see here, suppose a line is not passing through the origin. So just take here any line which is not passing through the origin, L. So when a line is not passing through the origin, then how can we find the direction cosines of this line? So we can find in this way, we can draw a line that will be parallel to this line and will pass through the origin. We can draw a line which will pass through the origin parallel to this line. We can draw a line. So the direction cosine of this line will be equals to this line, because even two lines are parallel, तो इन दोनों का डायरेक्शन जो कोसाइंस होगा वो सेम होगा. तो if a line is not passing through the origin, then we will draw a line parallel to that will pass through the origin. अब उसके बाद हम लोग ये चेक कर लेंगे कि वो लाइन एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल यहाँ बीटा एंगल और यहाँ गामा एंगल फॉर्म कर रहा है, देन यू नो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा will be the direction cosines. Now there is another word. Now let us see solve a question based on the direction cosines. So direction cosines के ऊपर एक जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. जैसे अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि find the direction cosines of a line x axis. Find the direction cosines of x axis, y axis and z axis. Find the direction cosine. Find the direction cosines of x axis, y axis and z axis. So here we have to find the direction cosines of x axis, y axis and z axis. So we know you can see the figure. We have to find here. So this is the question, you can see. So we know direction cosines of x axis, y axis and z axis. So you can see the screen. We have to find the direction cosines of a line x axis, y axis और z axis. So आप जानते हो कि x axis के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा तो वो एंगल अल्फा हो जाएगा 0. x एक्सिस y एक्सिस के साथ आप जानते हो कि वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री. सो ऐसा है कि हमको फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन x एक्सिस का, तो हमको सबसे पहले डायरेक्शन एंगल मालूम होना चाहिए कि x एक्सिस के साथ आप जानते हो कि इट विल मेक एन एंगल ऑफ ये तो कॉन्साइड करा दैट एंगल विल बी 0 डिग्री. देन बीटा y एक्सिस के साथ ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा और गामा दैट मीन्स डायरेक्शन एंगल विथ है ना z एक्सिस के साथ x एक्सिस वो भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा. देन ऑब्वियसली जो डायरेक्शन कोसाइन होगा फॉर x एक्सिस यू कैन राइट है फॉर x एक्सिस, तो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो हो जाएगा cos अल्फा दैट मीन्स cos 0 1, बीटा विल बी cos बीटा दैट मीन्स cos 90 और इसका वैल्यू आप जानते हो कि 0 होगा. एंड गामा cos गामा सॉरी यार L M एंड N, ये M होगा, डायरेक्शन कोसाइन M होगा ये, एंड हियर इट विल बी N, ये M होगा और ये N होगा cos गामा. सो cos 90 अगेन इट विल बी 0. सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर y एक्सिस. आप y एक्सिस के लिए भी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हो. y एक्सिस आप जानते हो y एक्सिस के साथ एंगल जो होगा डायरेक्शन एंगल सबसे पहले तो y एक्सिस का हम लोग फाइंड कर लेंगे. तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 90 डिग्री, बिकॉज y एक्सिस x एक्सिस के साथ अल्फा जो होता है एंगल वो आप जिस लाइन का है ना फाइंड करना चाहते हो x एक्सिस के साथ क्या एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री.
बीटा होगा 0 डिग्री वाई एक्सिस के लिए, बिकॉज वाई एक्सिस के साथ 0 डिग्री फॉर्म करेगा, और गामा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा अगेन 90 डिग्री, बिकॉज वाई एक्सिस जेड एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। देन वी कैन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन कोस अल्फा, देन कॉस 90 डिग्री, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। एम का वैल्यू हो जाएगा कॉस बीटा, दैट मीन्स कॉस 0 इसका वैल्यू हो जाएगा 1, एंड एन कॉस गामा, और here again it will be 90 degree, so it will be 0. So for at y axis similarly you can find for z axis, for z axis अब आप फाइंड कर ही सकते हो कि अल्फा का वैल्यू फॉर जेड एक्सिस जानते हो कि अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, बीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, एंड गामा का वैल्यू हो जाएगा 1, गामा का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री। सो द डायरेक्शन कोसाइंस विल बी, डायरेक्शन जो कोसाइंस होगा डी, आप इस तरह से शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, डी सी विल बी डायरेक्शन कोसाइंस आर, क्या हो जाएगा 0 0 एंड 1। So for x-axis again I am writing for x-axis it will be डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, तो हो जाएगा ये 1 0 0, एंड डायरेक्शन कोसाइंस फॉर y axis 0 1 0, and direction cosines for z axis it will be 0 0 1. So this is the basic one, है ना, how can you find the direction cosines of x axis, y axis and z axis. So let us see another question. अभी आप एक क्वेश्चन और देख सकते हो, जैसे see this question, question number 2, if a line makes angle 90 degree, 60 degree and 30 degree with the positive direction of x y and z axis respectively, find its direction cosines. सो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक लाइन है जो 90 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ फॉर्म कर रहा है, वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंड जेड एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल। सो हेयर दैट मीन्स डायरेक्शन एंगल इज गिवन, सो नाउ वी हैव टू फाइंड योर सॉल्यूशन, डायरेक्शन को साइंस फाइंड करना है। सो हेयर अल्फा इज गिवन, अल्फा दैट मीन्स ये जो डायरेक्शन एंगल है ना, इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज 90 डिग्री, that means direction angles are given, beta is given 60 degree and gamma is given that is 30 degree. So we can find here its direction cosines. So direction cosines we know cos alpha l हो जाएगा, that means cos 90 degree, इसका वैल्यू आप जानते हो 0, and m will be cos beta, that means cos 60 degree, cos 60 degree का वैल्यू आप जानते हो ऑलरेडी, it will be 1/2, and n cos गामा का वैल्यू हो जाएगा cos 30 डिग्री, दैट मीन्स इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2। सो 0 1/2, दैट मीन्स आप इस तरह से ट्राइड फॉर्म में लिख सकते हो, 0 1/2 √3/2 आर द रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। Now another question based, let us see another question based on direction cosines. अब डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर एक let us see. You can see this question. Question number 3. Find the direction cosines of a line which makes equal angles with the coordinate axis. मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सपोज ये थ्री डायमेंशनल प्लेन कंसीडर करो, ये हो गया x, यहाँ पर सपोज इट इज y एंड इट इज zx. सो इट इज गिवन दैट डायरेक्शन कोसाइन आपको फाइंड करना है उस लाइन का विच मेक्स एन एंगल्स विथ इक्वल एंगल्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कोई एक लाइन है सपोज and it is making an equal angle with suppose z के साथ भी x axis का और x axis के साथ suppose it is making an angle alpha with each, है ना, suppose ये थीटा एंगल सबके साथ फॉर्म कर रहा है,
लेट थीटा एंगल ये फॉर्म कर रहा है सबके साथ ना, लेट इट इज गिवन ना विच मेक्स इक्वल एंगल्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आप लेट करो कि ये जो लाइन है जिसका आपको डायरेक्शन को साइन फाइंड करना है वो जेड एक्सिस के साथ भी थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है और एक्स एक्सिस के साथ भी थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है और वाई एक्सिस के साथ भी थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हो कि अल्फा का वैल्यू भी थीटा आ गया और बीटा का वैल्यू भी थीटा आ गया एंड गामा का वैल्यू भी थीटा आ गया। सो यूजिंग दिस अब आपको एक रिलेशन याद रखना चाहिए कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन होता है, हम लोग इसको भी प्रूव भी करेंगे कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। सो एल दैट मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये हो जाएगा 1। सो कॉस स्क्वायर अल्फा दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अल्फा भी डायरेक्शन एंगल्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ क्या है, सेम। सो इसको मैंने लेट किया कि सपोज इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो हेयर कॉस थीटा आप यहाँ से फाइंड करोगे तो दैट विल बी प्लस माइनस 1/√3 बिकॉज cos स्क्वायर थीटा विल बी 1/3। सो यहाँ से जो cos थीटा होगा वो प्लस माइनस 1/√3। सो इन दिस वे यू कैन सी देयर विल बी 2 सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। आप जानते हैं तो कौन कौन सा होगा। सो इट विल बी प्लस माइनस 1/√3। so plus minus 1/√3 because cos alpha, cos beta and cos gamma all are same. So these are the direction cosines of the given line, direction cosines of the given line. Let us see another word. We will define direction ratio. Direction ratio. Direction ratio. Now we will define direction ratio. Direction ratio. Direction ratio. Direction ratios. It is related to the direction cosine. Suppose the direction ratios are also known as sometimes direction number. Direction numbers. Directional numbers. आप कह सकते हो D ratios in short form of a line. So D ratios are the numbers. Na? D ratios are the numbers. Suppose A, B, C are 3 numbers such that they are proportional to the direction cosines. That means they are proportional, मतलब any 3 numbers which are proportional to the direction cosines known as direction ratios of a line. So by the definition of direction ratios, any 3 numbers which will be proportional to the direction cosines known as direction ratio. तो बाय द डिफिनीशन वी कैन राइट, सपोज एक लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है ए बी और सी और उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है एल एम और एन। तो यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन बाय द डिफिनीशन ऑफ डायरेक्शन रेशियो वी कैन राइट ए बाई एल विल बी इक्वल्स टू b by l will be equals to b by m and it will be c by n and it is constant. Suppose k where k is any, say any, because it is given that they will give same ratio na, because they are proportional, abc are proportional to lmn. So suppose that it gives the same constant value k, give same ratio where k is any number. So here you can see we can find here, यहाँ से आपको a by l is equals to हो जाएगा k. So we can write a is equals to we can write lk. Similarly here we can write b is equals to mk and c is equals to nk. So that means अगर आप किसी लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियो लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एक शॉर्ट सेट के फॉर्म में हो गया ये एल के एम के और एन के. So this represents, so these are the numbers you can see, any numbers, direction ratios are any numbers which are proportional to the direction
cosines known as direction ratios. Now we will see direction ratio, direction direction ratios of a line passing through 2 points, है ना। सपोज एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, having coordinates x1 y1 z1 and another point is q x2 y2 and z2. So how can we find here direction ratio? So direction ratio will be, direction ratio of line PQ will be, it will be difference, है ना, x2 minus x1 y2 minus y1 and z2 minus z1. So this will be the direction ratio of this line. The direction ratio will be this, x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1. Now suppose we have to find its direction cosines as well. अगर आपसे पूछा जाए कि find the direction cosine of a line which is passing through 2 points given coordinates a p and q, then कैसे find करेंगे direction cosine? So here it will be L by, याद रखोगे, x2 minus x1 upon pq. अगर ये लाइन सेगमेंट है तो आप ये pq डिस्टेंस फाइंड करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, देन यू कैन फाइंड यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, देन m का जो वैल्यू होगा y2 minus y1 upon pq and n will be z2 minus z1 upon pq. So in this way you can find the direction cosines of a line which is passing through 2 points and direction ratios of a line which is passing through 2 points. So these are the basic things related to three-dimensional geometry, because it will require in to finding the equation of a line, equation of a plane. So direction ratios and direction cosines are very important for that. So thank you everyone. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगेन. So thank you.